Today our topic of discussion is heat stroke and its homeopathic treatment. Today at least कितना टेम्परेचर डॉक्टर साहब आज कितना था 45 था? Yes sir, 45. Today we are the heat wave actually hit the 45 degrees Celsius, and the people are suffering from the different kind of diseases like the gastroenteritis and heat stroke. In homeopathy, what you have to take first is to take the measures how to prevent from the heat stroke, and then I will tell you a few medicines which are related with the heat stroke treatment. Number one, you must take plenty of water. I just today uploaded a post in which I have told you about the for making a skim लस्सी, वो दही का जो दही को हम रगड़ के जब बनाते हैं उसको लस्सी कहते हैं, उसको स्किम मिल्क या स्किम योगर्ट कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको स्किम योगर्ट कहते हैं, मिल्क है। तो एक तो वो by adding the ORS in the skim yogurt you can take plenty of lassi and to minimize the temperature of your body. Number one. Second is to take some ORS as well. इसके अंदर ORS डालें? नहीं, वो डाले डाला अभी डाला। क्या बात, ये देखेंगे मिंट मिंट फ्लेवर में ORS डाल के आपकी तैयारी ज्यादा जाती है। अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो द नंबर वन मेडिसिन इज बेलाडोना and second one is blue nine. Blue nine and belladonna in the higher potency prevents you from the heat stroke, and it's the side effects which those labor work who are working under the sunlight directly वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर एक स्किन जो बर्न हो जाती है हीट स्ट्रोक की वजह से, जल्द खराब होती है, उसकी दवाई क्या है? So belladonna and blue nine take in 1 mg, and for the burning of the skin you can take sol 1 mg, sol or calendula. These two medicines are very best for the treatment of skin burning due to the heat stroke or direct sunlight. तो ये थी आज की एक छोटी सी क्लिप थी। बहुत शुक्रिया।